Guruji here, and I'm back with another video, and this time it's news. No, I'm not getting you random Times of India kind of news. I'm getting you all the tech news. Yes, this is the weekly tech news that I'm starting on my channel. Every Saturday you can come here to watch the cool tech news given to you by yours truly. Now, if you want to do that, if you want to get all the notifications, please do consider subscribing to us and liking the video. If you don't like the video, do write down in the comments below after watching the whole thing why you didn't like it and what I can improve. Now that we have that out of the way, if you want to watch this in Hindi, अगर आपको ये वीडियो हिंदी में देखना है तो नीचे एक टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहां जाके आप ये वीडियो हिंदी में भी देख सकते हैं. So guys, let's start with the tech news. So the first news is great for all the Vivo IQOO phones. Yeah, sad about us. Well, Vivo just accepted that they are truly going to launch Origin OS. When? No one knows, but it is believed that it might be launched with the X60 phone on November 19th. So you might ask why November 19th? November 19th is the Vivo developer conference where they're going to talk about their new OS, their future plans with the company, and are also going to use the same platform to launch their new phone. Now, it is assumed that with this new phone will come the Origin OS. What is Origin OS? Origin OS is basically the code name for Original OS, which they are bringing in as a OS to transform the company from Android 10 to Android 11, where they're going to make a big leap in how people experience their software. Now, the reason why this happened was basically because people started learning that Vivo's OS is not one of the best, and that was what was reflected with the coming reports. And Vivo understood the gravity of the situation, and being known as a very pathetic update giver, and I know that's not a word, but yeah. So yeah, they want to change, and they've said that it's going to be really amazing, but we'll get to know further on November 19th. And if you want to know what is going to happen on November 19th and you want all the news about that, subscribe man, subscribe. Yeah. Now the second news is for all the Samsung lovers out there. The Samsung Galaxy S21 renders have been leaked, and these are supposed to be coming from engineering models. Now obviously take it with a pinch of salt because these are at the end of the day leaks, but it looks really cool, it looks really nice. Now it is really difficult to top the current lineup because the current lineup has been really successful, especially the Note 20 Ultra, which is really costly but has some amazing features which I don't think can be topped other than maybe a processor refresh. But yeah, and even the Samsung FE edition that just came for S20 is amazing, and it's at a great price point. But then again, Samsung is known for topping their hardware one launch after the other, so that might happen and you might need to be on a lookout for that. Now we are coming to the Lenovo Legion, and wow, Lenovo Legion just announced another model for their Legion phone, and it is interesting to say the least. Now, most of the Legion phones are extremely gamer centric and the design is very gamer centric. But with the Legion phone, this time what they've done, they've introduced a special edition which has white color on the main body of the phone, but the middle is transparent. Now, you know that the age of transparent phone backs is something that has come and gone but keeps on coming. So it's pretty stylish and looks really cool when it's true. Now in this scenario, it does seem like it's true and it's actually transparent because you can see the chip Snapdragon 865 Plus there performing its task. So it is really cool for all the gamers and would make a really cool centerpiece too. But this is going to come at a premium because it's going to be a special edition phone. Now that is done, the Indian Army has launched their own messaging service as a rival to WhatsApp. Now this messaging service is called SAI or SAI for short form, and this messaging service will basically allow you to use the application in a secure way. The servers will be in India and all your data will be handled natively in India, so that will be really nice. It will be a very secure platform since it's coming from the armed forces, so that's really cool. Now what else might be happening, what else is coming, let me tell you. Snapdragon 875, right? Snapdragon 875 benchmarks have been leaked, and these benchmarks tell a very amazing tale. Well, Snapdragon 875 is going to be extremely powerful. This also showcases that the change in the chipset die is going to bring plethora of performance for the phones to use, and it's going to make them so much better. I can't
wait to get my hands on a Snapdragon 875 phone, but wait, it's going to take some time because of all the lockdown and corona issues happening and the second wave starting now. Please wear your mask. Second wave starting now. There might be some difficulty in getting phones with the latest processor, with the whole Indo-China is going on, but the whole US-China trade war that is going on, it might be a whole problematic scenario. And the reason why I brought this up is Kirin 9000 chipset. Did you know Huawei just launched their Mate 40 Pro? Yeah, amazing phone. By the looks of it, it looks really cool. The processor is extremely powerful. It's extremely nice. Sadly, we cannot get it in India, or you cannot get it in US because of the bans. And I'm fine with it, to be very honest. But it's a really nice piece of hardware. The question now is, can Huawei keep continuing to produce flagship level chips given the fact that they're basically operating in China now, and that's their home, and most of their business has been outside China has gone? Well, we'll get to see that and I'll obviously update you on that. But yeah, they announced that. What else? You know Oppo, the brand that brings really cool phones but is not usually considered to be the top of the line, the crazy spec? Well, that's about to change. Snapdragon 870. So this is going to be like a overclocked chip. So it's going to be a higher iteration of the 865 plus lower iteration of 875. Now this Snapdragon 870 is going to be exclusively for Oppo. And to decode this means that Oppo is going to get a little exclusivity from Snapdragon, which just showcases a change in the philosophy of how Oppo works. Usually Oppo is considered a brand that is more or less camera centric and is not considered to be a very high flying brand per se. I think that's about to change with this exclusive deal going on. Oh, another thing for the gamers out there, what's going to happen? The PS5 launch is going to take place. Now, obviously, they removed that news. As soon as it appeared, it went away. But yeah, the people who saw it, November 19th. So November 19th might be when the PS5 gets launched in India. Now, those of you who don't know what was the big issue, well, some man in Delhi had a copyright for PS5. Why? No one knows. Why did he do this? No one knows. Most probably to get money from it. But yeah, all the gamers who were irritated by this news and the idiosyncrasies of what happened, you're in for a treat. The PS5 is about to launch and the estimated prices are anywhere from 39,000 to 49,000. So enjoy. I cannot buy it. But yeah, enjoy. That's all for this episode of Tech News, guys. If you did like the news, please like, share and subscribe. Now we're going to move to the Hindi version of it and I'll see you in the next one. Hi guys, कैसे हो? आज मैं लाया हूँ आपके लिए टेक न्यूज़। तो एक ये नया एक मैं फीचर शुरू कर रहा हूँ अपने चैनल के अंदर, जहाँ पे मैं हर वीक में हर सैटरडे को आपको टेक न्यूज़ दूंगा पूरी वीक की, ठीक है? तो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, आपको जानना है क्या हो रहा है टेक न्यूज़ में, सब्सक्राइब दबा दो गाइस। आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ आने वाली है। तो वो होने के बाद चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, बेसिकली इस टेक न्यूज़ में पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे वो है वीवो और उनका ओरिजिन ओएस। तो मैं जानता हूं, मैं इसके बारे में पहले बात कर चुका हूं, ऊपर आई बटन में आपको वीडियो दिख रहा होगा। तो जो ओरिजिन ओएस है वो पहले एक अनकन्फर्म लीक था, बट वीवो ने उसे फाइनली कंफर्म कर दिया है और ये भी बोला है कि जो उनकी डेवलपर कॉन्फ्रेंस होने वाली है 19 नवंबर को, वहां पे वो हमें एक ओरिजिन ओएस का स्नीक पिक देंगे। और लोग ये अज्यूम भी कर रहे हैं कि ओरिजिन ओएस उनके X60 फोन के साथ लॉन्च हो सकता है। जिनको ओरिजिन ओएस क्या है पता नहीं। ओरिजिन ओएस जो वीवो है उनका एक ब्रांड चेंज का एक नजरिया है, जहां पे वो अपनी जो रेप्यूटेशन है सॉफ्टवेयर को रिलेटेड वो चेंज करना चाहते हैं। और ये एक्चुअली सिर्फ एंड्रॉइड 11 बेस्ड होने वाला है। तो ये कंपनी का जो एंड्रॉइड 10 से एंड्रॉइड 11 की तरफ का जंप है ये भी सिग्निफाई करने वाला है। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। अगर आपको उस पर पूरा कवरेज चाहिए तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर दो यार, मैं कवरेज करूंगा। और अगली न्यूज की तरफ चलते हैं जो है सैमसंग वालों के लिए। सैमसंग गैलेक्सी S21 लॉन्च नहीं हुआ है,
नहीं हुआ है, उसके रेंडर्स आए हैं। और जो ये रेंडर्स हैं ये इंजीनियरिंग मॉडल्स के रेंडर्स हैं जो काफी अच्छे लग रहे हैं। अब मेरे दिमाग में तो ये डाउट है कि जो उनकी करंट सीरीज है उसको कैसे टॉप कर सकता है सैमसंग। सैमसंग ऑलरेडी इतने कूल फोन बना चुका है, नोट 20 अल्ट्रा जैसा मतलब कोई और फोन ही नहीं है, उसके इतने फीचर्स और फिर उन्होंने ले आया फैन एडिशन। और जो फैन एडिशन है उसकी प्राइस देख के तो मजा ही आ गया, क्या बढ़िया फोन है उस प्राइस में। मैं नहीं ले सकता वो अलग बात है, बट काफी बढ़िया फोन है यार उस प्राइस में। इसके बाद आता है लेनोवो लीजन। तो जो भी लेनोवो लीजन में इंटरेस्टेड इंसान हैं जो इसे बहुत ही हाइपर गेमिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी कूल चीज़ है। जो लेनोवो लीजन है इसमें एक नया स्पेशल एडिशन मॉडल लॉन्च हुआ है जो मतलब वाइट कलर का और बीच में ट्रांसपेरेंट है। अब मुझे पता है ये ट्रांसपेरेंट काफ़ी स्टाइल में हो गया है, पर इसमें एक्चुअल वाला ट्रांसपेरेंट आई थिंक बैक है, जिसकी वजह से आपको दिखता है कि आपकी जो स्नैपड्रैगन 865 प्लस चिप है ये चल रही है और ये काफ़ी कूल है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो मुझे तो ये देख के काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इसके बाद आता है स्नैपड्रैगन 865। नहीं आया नहीं है। स्नैपड्रैगन 865 के जो बेंचमार्क है वो लीक हो चुके हैं और ये जो बेंचमार्क है ये इतने बढ़िया है, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो काफ़ी क्रेजी होने वाला है। बट ये फोन में कितने जल्दी आएंगे इस पर मैं बहुत डाउटफुल हूँ। कोरोना वायरस या यूएस चाइना ट्रेड वॉर, इंडिया चाइना, ये जो सारी चीजें चल रही है उसकी वजह से हो सकता है कि ये जो आपको फोन में स्नैपड्रैगन 875 है वो मिलने में प्रॉब्लम हो। अब जब हम बात कर ही रहे हैं यूएस चाइना की तो हुआवे की बात कर लेते हैं। उन्होंने कल अपना नया फोन लॉन्च किया और उसके साथ फ्लैगशिप प्रोसेसर लॉन्च किया किरिन 9000। और ये जो फोन है इतना पावरफुल है, इतना बढ़िया चलता है, बट ना आप इसे इंडिया में ले सकते हैं ना यूएस में ले सकते हैं। प्लस ये जीएमएस के साथ नहीं आता, एचएमएस के साथ आता है, जिसमें आप आधे जो एप्स डेली यूज कर रहे हैं वो यूज नहीं कर सकते। तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक चीज होती है, उसकी वजह से आपको ये मजबूरी हो जाती है सोचने में कि क्या हुआवे कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि हुआवे का जो बिजनेस है वो काफी कंसिडरेबल अमाउंट में कम हो चुका है। तो क्या हुआवे ये फ्लैगशिप चिप लाना कंटिन्यू कर सकता है, पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं है, बट देखेंगे क्या होता है आगे, क्या ये सैंक्शंस लिफ्ट होते हैं नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो PS5 की जो लॉन्च डेट है वो फाइनली एक आ गई थी जो उन्होंने वापस गायब कर दी गिवन, बट 19 नवंबर ये टेंटेटिव डेट लग रही है कि PS5 लॉन्च होगा। जिनको पता नहीं लॉन्च में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, तो दिल्ली में एक आदमी था उसके पास PS5 ये ट्रेडमार्क था, कॉपीराइट था उस पर। तो अब प्ले स्टेशन वाले क्या करेंगे, तो उन्होंने फिर उसके साथ डील की। तो मुझे तो समझ नहीं आया क्यों उसने लॉन्च से पहले ही ये करवा लिया कॉपीराइट वगैरह, बट मुझे तो लगता है वो पैसे ऐंठने की एक स्कीम थी। दिस इज ऑल फॉर दिस न्यूज़ गाइज। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वन।